So today we will start the new topic, similarity of matrices. Similarity of matrices. Okay. So definition: if A and B, A and B are two square matrices, two square matrices of order n, of order n, then then matrix B is said to be similar to A, then matrix B is said to be similar to matrix A, said to be similar to matrix A, if there exists a non-singular matrix, a non-singular matrix, singular matrix P, such that B can be written as P inverse A P. If B can be written as P inverse AP, and there must exist a non-singular matrix P such that this condition hold, then we can say that matrix A is similar to matrix B. So this is the definition for similarity of two matrices. Getting? Now we define the diagonalizing matrix. So definition: diagonalization of a matrix. Diagonalization of matrix. This is a very important topic in matrix theory. Okay. So a square matrix A is said to be diagonalizable. A square matrix A a square matrix A is said to be diagonalizable if what, if it is similar to this matrix, if it is similar to a diagonal matrix, if it is similar to a diagonal matrix, that is, see here, if I combine both the definition together, then we will have A is diagonalizable, matrix A is diagonalizable if there exists a matrix P, there exists a matrix P such that P inverse can be written, such that P inverse matrix A P can be written as D, where D is a diagonal matrix, where D is what, your diagonal matrix. D कैसे आपका दिखेगा, ऐसा A11 up to 0, then 0 822 up to 0, and like this is 0 and A and N. This is the diagonal matrix. Only diagonal elements will survive and other elements are 0.
And what is the order of this matrix? N cross n, where D is a diagonal matrix. Diagonal matrix. Okay. And matrix P is said to be what? Diagonalizing matrix or transformer matrix, or you can say model matrix. So, and matrix P is said to be diagonalize A, or you can say transform A to a diagonal form, to a diagonal form. Diagonal form means what? So there must exist a matrix P, which is what known as model matrix, such that this matrix transform the given matrix A to the diagonal form. So matrix P is known as what? Model matrix or transform matrix to a diagonal form. Okay. So this is the definition for diagonalizing of matrix. Now using this definition, we will do some problem. Find, if I ask to find A to the power n or A to the power k, then what I have to do? We just transform, shifting the matrix P to the that side. So since we have P inverse AP and this equal to D. Now what I have to do? We shift P on that side. So this become A, and this equal to what? If P goes here, so this become here P D as it is, and this P become P inverse. Okay. Now what I have to do? I am taking power of k. So if you take power of k, then you will have P D raised to k and P inverse. शेयर यहाँ पे आपको पावर के नहीं लेना है, ओनली डायगोनल मैट्रिक्स में आपको पावर के लेना है. सो दिस इज फार्मूला टू फाइंड आउट एनी मैट्रिक्स पावर. ओके. So be careful for this formula. If I give one matrix A is given, and if I ask find the matrix A to the power 10, तो आपको ये फार्मूला यूज करके निकलना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, then characteristic value, then respective eigenvector, then you will have the transform matrix P. आपको ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स P मिलेगा. then you can diagonalize that matrix and take a power of A both sides, so you will get the matrix power k. Getting? These are the procedure. सर इसका एक एग्जांपल करेंगे ना आप? हाँ, अरे डिफिनेशन के बाद एग्जांपल ही तो आता है. ओके सर. पहले कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पहले समझिए, फिर आगे प्रॉब्लम पे चलेंगे. ठीक है. ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन आपको अच्छे से माइंड में फिट करके रखना है. नाउ वी विल डू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस. लेट्स डू द प्रॉब्लम. The problem is very important for you. Example number 1. Find the matrix P. Find the matrix P which diagonalizes the matrix A. Which diagonalizes the matrix A. Matrix A. Your matrix A is given to you 1 1 minus 2 0 and 2. Okay. Which diagonalizes the matrix this. So what is our job here? Our job is to find characteristic equation. Solution. The characteristic equation is given by A minus lambda I
equal to 0. So for this we will have a minus lambda I, we will have 1 minus lambda, then minus 2, 0, 2 minus lambda, and this equal to 0. So cross multiply, you will get 1 minus lambda and 2 minus lambda, minus and minus plus 0, and this equal to 0. Cross multiplying, you will get this. So from this you will have 1 minus lambda, 2 minus lambda equal to 0. So 1 minus lambda equal to 0, or 2 minus lambda equal to 0. So from this you will get lambda equal to 1 or lambda equal to 2. So these are the eigenvalues of the given matrix A. Okay, you will have two cases. Case number 1, when lambda equal to 1, then what happen? So we will have characteristic equation, sorry, we have characteristic matrix A minus lambda. So this is lambda 1, A minus lambda 1 I, A minus lambda 1 I, and their corresponding eigenvector x1, and this equal to 0. This is the formula for eigenvector. Okay, now we find characteristic matrix. So instead of lambda 1 we put here 1. So here if I putting here 1, so you will get 1 minus 1, that is 0, and minus 2 and 0, and here 1 minus 2 minus 1, that is how much? 1. 2 minus 1 is 1, and your eigenvector, that is what? X1, x2. Column vector, your column vector x1 is x1, x2, that is known as what? Eigenvector, and this is 0, 0. Okay, now multiply this. So you will get 0 times of x1 minus 2 times of x2, and this equal to 0. So from this is the first equation, and here 0 times of x1 plus x2, and this equal to 0. This is equation number 2. Now solving equation number 1 and 2. Solving equation 1 and 2. So solving equation 1 and 2. So equation number 1 implies that x2 equal to how much? X2 is 0. So this will 0 only minus 2 times of x2. So this gives x2 equal to 0. So equation number 1 implies that x2 equal to 0. Okay. So equation number 1 implies that x2 equal to 0. Now equation number how 2 is also implies x2 equal to 0. Okay. So both equation will be same. Give the same value for x2. So we will get, so from 2 also we will have same thing. Okay. So let x1 equal to x1 x2 be eigenvector eigenvector for eigenvalue lambda 1 equal to how much? 1. Now we found x2 equal to 0 and x1 is same as x1. So therefore x1 equal to x1 is same as x1 and x2 is 0. So this gives, I am taking x1 common. So we'll have 1, 0. Okay. So where x1 is arbitrary, where x1 is arbitrary. Arbitrary means what? You can choose any value of x1, arbitrary. So therefore we have x1 equal to how much? If I taking x1 equal to 1, so you will get 1, 0 is an eigenvector, is an eigenvector for lambda 1 equal to 1. Okay, now come to the case number 2. Case number 2, when lambda 2 equal to how much? Lambda 2 हमको कितना मिला था? Lambda 2 is 2. Lambda 2 is 2. Then we will have a minus lambda 2 I, a minus lambda 2 I x2,
and this equal to 0. Getting this much? Yes, sir. Ha. So now we putting here instead of lambda, we put lambda 2 equal to 2 in the in your matrix, this matrix. So just tell me the how much you get matrix. Just tell me. Bolo. -1 -2 0 0. -1 -2 0 0. Is this correct? Please, other students verify it. Other students verify. Yes, sir. Right. Huh. So this is x1, this is x2, and this equal to 0 0. Okay. Now multiply this. So you will get minus x1 -2 times of x2 and this equal to 0. यहाँ से आपको second equation नहीं मिलेगा because you will get 0 equal to 0. Okay. So from this you will have minus x1 equal to 2 times of x2. So this gives x1 equal to minus 2 times of x2. Okay. So now put. So let go to the next page first. So let x2 be an eigenvector, x1, x2 be an eigenvector for lambda 2 equal to how much? 2. So therefore x2 equal to x1 is how much? x1 is minus 2 times of x2. x1 is minus 2 times of x2 और x2 आपका क्या है? x2 as it is. Okay. And this equal to, I am taking x2 as outside common, so we get minus 2 1 where x2 is arbitrary, where x2 is arbitrary means what? You are free to choose any value. Okay. So therefore x2 is minus 2 1. So this is an eigenvector for eigenvalue lambda 2 equal to 2. Now, therefore, we can have eigenvector. Therefore, thus we have eigenvector x1 equal to first eigenvector, x2 equal to second eigenvector are eigenvectors eigenvectors for eigenvalues lambda 1 equal to 1 and lambda 2 equal to 2 respectively. Okay. So x1 is how much? How much we obtain x1? Tell me. How much we obtain? 1 0. x1 is 1 0 and x2 is minus 2 1. So these are the eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda 1 equal to 1 and lambda 2 equal to 2. Now therefore we have model matrix, or you can say transform matrix. We have transform matrix or transforming matrix. इसको आप मॉडल मैट्रिक्स भी बोलते हो, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स और मॉडल मैट्रिक्स. मॉडल matrix P. P is what? Your x1, x2. So therefore, matrix P. x1. What is the x1? x1 is 1, 0. x2 is how much? Minus 2, 1. This is your transforming matrix, or you can say model matrix. And this matrix must be non-singular. So find karo determinant of matrix P. Find determinant of matrix P.
देखते हैं नॉन सिंगुलर आता है कि सिंगुलर आता है। मैट्रिक्स पी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पी दैट इज 1, 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, and this will 0. So you will get 1 and which is not equal to 0. Therefore we can say that P is matrix P is non-singular. Non-singular. Okay. Therefore P inverse exists. P inverse exists. Okay. P inverse exists means what? You can find the inverse of the matrix P. Getting? वो कभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स पी आपका नॉन सिंगुलर होगा। सपोज ये जीरो हो जाता है, determinant of P is equal to 0, then you cannot find the inverse of the matrix P. Okay, so go for next page. Therefore P inverse exist है तो inverse निकाल लीजिए। Therefore P inverse equal to P inverse what? Adjoin a matrix P and divide by its determinant of P. So this is the formula for inverse. And your adjoin of matrix, how to find the adjoin of matrix? Just here, suppose we have matrix A. Okay, matrix A is A B C D. तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं? पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो ए डी माइनस बी सी। अब इसका एडजॉइन कैसे निकालते हैं? एडजॉइन ऑफ ए इज वोट, एडजॉइन ऑफ ए इज वोट। जैसे इसको इंटरचेंज कर दो, डी को ए पे ले जाओ, ए डी हो गया, और ए को डी पे ले जाओ, और बाकी जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसके साइन खाली चेंज करना है, माइनस से बी और माइनस सी। गेटिंग? तो आपका एड ज्वाइन हो गया। तो ए इनवर्स आपको क्या मिल जाएगा? ए इनवर्स इज 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, और मैट्रिक्स ए इज डी माइनस बी माइनस सी और ए आपका इनवर्स इस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ से भी आप निकाल लीजिए कैसे निकलेगा ये। इसका पहले ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसफॉर्म, सो इंटरचेंज दिस, सो विल गेट 1 and 1, 1 से 1 करोगे तो सेम मिलेगा आपको। और नॉन बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट्स के क्या करते हैं हम लोग? माइनस साइन को चेंज करते हैं। यहाँ पे -2 था तो जस्ट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 था तो 0 ही रहेगा। ठीक है। और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी, हाउ मच यू गॉट डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इज 1। यहाँ पे 1 अपॉन 1 करोगे तो क्या मिलेगा? सेम। सो यू विल गेट जस्ट सेम मैट्रिक्स 1 2 0 1. So inverse of matrix P is just adjoint of matrix P. Okay. So this is the inverse of matrix P. What I have to find out? क्या निकालने का था हमको? Find the matrix P which diagonalize the matrix A. Okay. Therefore, what I have to do? Find a matrix P which diagonalize the matrix A. So we will have P inverse matrix A P, and this equal to P inverse is how much? How much we obtain P inverse? 1 2 0 1. Okay. And matrix A, how much we obtain matrix A? Matrix A is given to you. And what is the matrix A is given? Tell me. 1 minus 2 0 2. Matrix A is 1 minus 2 and 0 2. And matrix P, your matrix P is what? How much we obtain matrix P? Matrix P is 1 minus 2 0 1. 1 minus 2 0 1. Now multiply this. Multiply. फटाफट multiply करो. So if you multiply this first row to first column, so this is what? 1 1 जा 1. Okay. इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 टाइम्स अब 0. ओके. अभी सेम इसी से यहाँ पे करो. -2, 1 से करेंगे -2 और 2 से 2 2 2 जा 4 +4
और अभी सेकेंड रो से कीजिए 0 एंड 0, सो ये आएगा 0 प्लस 0। ओके, नाउ इसका मल्टीप्लाई करो अभी इसके साथ, सो यू विल गेट 0 एंड इसका इसके साथ करोगे तो यू विल गेट 2। ओके, दिस इज, ये तो ये दोनों का हुआ। अभी इसके साथ 1 माइनस 2 0 1। ओके, एंड you will get, just multiply this, 1 0 2 and here 2. Now next matrix 1 minus 2 0 1. Okay, now again multiply. So if you multiplying this, 1 1 ja 1, 1 1 ja 1 and plus 0 plus 0, then यहाँ पे इसी के साथ मल्टीप्लाई करो, so this will minus 2 and plus 2. Now this multiply by this, so 0 multiply by 1 that is 0 and 2 multiply by 0 that is 0, and यहाँ पे क्या multiply करेंगे 0, so this will get 0 and multiply by plus 2 1 ja 2, so you will get 1 0 0 2। ये कैसा मैट्रिक्स है? This is a diagonal form matrix. Only diagonal elements survive and other elements are 0. So this is what? This is equal to D, where D is diagonal matrix, where D is a diagonal matrix. Diagonal matrix. Okay, where D is a diagonal matrix. हो गए? तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? Find the matrix P which diagonalizes the matrix A. Hence prove. So we got the matrix P ना? We got here matrix P. मैट्रिक्स P क्या किया? मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर दिया। नाउ कंप्लीट योर प्रॉब्लम। इस तरह से आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नाउ एडिशनल, इफ आई आस्क एडिशनल इन एडिशन, इफ आई आस्क फाइंड, इसी क्वेश्चन में मैंने बोला आल्सो फाइंड, ए टू द पावर मैंने बोल दिया आपको, सपोज 10। ओके, देन व्हाट हैपन? तो आपको कैसा करना है? ए टू द पावर 10 में गो टू द नेक्स्ट पेज फर्स्ट। सो वी हैव सिंस P इनवर्स ए पी इक्वल टू डी, मैट्रिक्स कैसा हो गया? डायगोनलाइजेशन फॉर्म में हो गया। सो व्हाट हैव टू डू? वी हैव टू transform this matrix on that side, so this become A equal to P D and P inverse. Now taking power 10 on both sides, taking power 10 on both sides, 10 on both sides, so you will get, we get A raised to 10 equal to P D raised to 10 and P इनवर्स से। यार इसमें आपका पावर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगा। आपको P इंटू पी इनवर्स इक्वल टू क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स व्हाट? 1। 1 का पावर 10 करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो इसमें आपका पावर 10 नहीं होने वाला है। सो हमको केवल डायगोनल मैट्रिक्स में पावर 10 करना है। समझ में आए? आर यू गेटिंग? Yes, sir. हाँ, now what? So therefore A raised to 10 equal to your matrix P. Just write down the matrix P. How much you obtain matrix P? Matrix P कितना आपको मिला था? 1 minus 1 0 1, 1 minus 1। सर -2 है ना? हाँ, जस्ट वही बोलो कितना आया? 1 - 2 0 1 minus 2
बोलो। और क्या था? 1 था शायद। 1 वन One. माइनस टू है, जीरो 1 वन। है, 1 है। 1 माइनस टू, यार पीछे से देख के बताओ ना मुझे कितना मिला। 1 माइनस, हाउ मच वी ऑब्टेन, 1 माइनस 2 0 1, ओके। नाउ डायगोनल फॉर्म मैट्रिक्स, हाउ मच वी ऑब्टेन डायगोनल, 1, 1 के पावर में क्या करना है आपको, 10 करना है। देन 0 0 एंड 2 के पावर में यहाँ पे क्या करना है, 10 करना है। ये आपको डायगोनल डी रेस टू 10 मिलेगा। नाउ पी इनवर्स वी ऑब्टेन, हाउ मच वी ऑब्टेन पी इनवर्स 1 2 0 2, 1 2 0 2। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई जो करोगे सो आपको ए टू द पावर 10 मिलेगा। ठीक है, ये आप घर से कर लेना खुद से। नाउ अंडरस्टूड दिस हाउ टू फाइंड ए टू द पावर 10 और 100 को भी, कोई भी पावर कैसे फाइंड किया जाता है, यू नो हाउ टू फाइंड, सर एक बोलो। बार बता दो ना। हाँ बता देते हैं। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 1 माइनस 2 0 1, ठीक है। 1 का पावर 10 करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा, 0 0, 2 के पावर 10। नाउ नेक्स्ट 1 2 0 2, फटाफट मल्टीप्लाई करो जैसे पहले किया था। सो दिस इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0। फिर से इसमें आ जाइए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 10, करेक्ट, यस। ना इसका मल्टीप्लाई करो 0 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। सो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0। नो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड प्लस 2 रेस टू 10, 0 प्लस 2 रेस टू 10 एंड 1 2 0 2 एज इट इज। एंड दिस इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करके लिखो 1 0, यहाँ से देखो माइनस 2 है, ये 2 है ना यहाँ पे, जैसे 2 रेस टू एम इंटू 2 रेस टू एन, तो बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, 2 रेस टू एम प्लस एन हो जाता है। तो यहाँ पे इसका बेस कितना है, सेम है, तो यहाँ पावर इसका कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 रेस टू माइनस 2 रेस टू 11, देन 2 रेस टू 10, सो माइनस 0, 1 1 जा 1 माइनस 2 रेस टू 10 multiply by 2 रेस टू 11 multiply by 0, that will 0. So now come to here, so this become what, 2 1 ja 2, 2 1 ja 2 minus 2 1 ja 2 minus 2 into 2 raised to 11, getting understood ना, then multiply by 0, 0 multiply by 1 that is 0 and इससे multiply करेंगे आपको 0 मिलेगा, तो 0 plus 0, okay। Now come to here, multiply by this, you will get 0 and 0 and plus 2, 2 raised to 10 multiply by 2, that is 2 raised to 10। इसको थोड़ा आप अच्छे से लिखोगे तो कैसा मिलेगा ये, 1 0 एंड 2, यहाँ से 2 माइनस बेस सेम है तो पावर विल बी एडेड, 2 रेस टू 12, ओके। नाउ 2 रेस टू 11, 2 रेस टू बेस सेम, पावर विल बी एडेड, सो दिस इज योर ए टू द पावर 10, ओके। और मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। यस सर। हाँ, सो इस तरह से आपको 2x2 मैट्रिक्स दिया रहेगा तो ऐसा कर सकते हैं। सिमिलरली ये विल हैव फॉर 3x3 मैट्रिक्स के लिए है, वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, क्योंकि वहाँ पर भी आपको 3 केसेस आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, फिर मैट्रिक्स पी आएगा, फिर उसको शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज द लॉन्ग प्रोसीजर, आप घर पे आराम से बैठ के कीजिए,
क्योंकि सेम टाइप का प्रॉब्लम कर करके मतलब नहीं है। अंडरस्टूड दिस मच? यस सर, एकदम। हाँ, चलिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ। लिखिए, so that the matrix are similar to diagonal matrices. Question number 2. Example 2. So that the matrix A, आपको मैट्रिक्स दे रहा हूँ, मैट्रिक्स A is -2, 2, -3, 2, 1, -6, 2, 1, -6, -1, -2, 0, -2, 0 is similar to diagonal matrix, is similar to diagonal matrix, diagonal matrix. Find the diagonal form, and diagonalizing matrix, and diagonalizing matrix. What have to do in this case? Same have to do. You have to first find characteristic equation, then characteristic value, then respective characteristic vector, then you will get matrix P, then you will get transform of matrix, then you can find diagonal form matrix D. सेम थिंग आपको वहाँ पे करना है, ठीक है? सो दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कम्स फॉर 8 मार्क्स, तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम करना है, तो आप ये सब करके रखिए, ठीक है? नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. सर अब एक मेथड से कर रहेंगे, वो बताने वाले थे कुछ. हाँ, वही बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक. हाँ, योर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. फंक्शन ऑफ अ, सर वाले मेथड से अलग सम सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ, फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फंक्शन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. सो यहाँ पे आपको क्या करना है फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में? इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विथ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, then we can find any power of matrix A. Okay, so if A is a non-singular matrix, A is a non-singular matrix, with distinct eigenvalues, with distinct eigenvalues, then we can find any power of A, any power of A. Okay, any power of A means what? Same thing मैंने कैसा किया था वहाँ पे, if is if matrix P inverse A P and this equal to what? D, तो मैंने क्या किया था पावर A निकालने के लिए उसको ट्रांसफॉर्म किया था उधर. सो A टू द पावर मैट्रिक्स A को उस साइड शिफ्ट करो, मैट्रिक्स P को, so you will get P D and P inverse. Now taking power
k, taking power k on both sides. So you will get p d to the power k p इनवर्स. इसका प्रूफ है, बट प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट विल नॉट रिक्वायर इन एग्जाम. तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. तो प्रूफ वो यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में. सो टेकिंग पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग पावर k on both sides. So you will get, we get a to the power k and this equal to p d to power k and p इनवर्स. सेम जो मैंने वहाँ पे बताया था ना, अगर उसमें और इंक्लूड किया रहेगा तो इस तरह से किया जाएगा. यही रिजल्ट मैंने वहाँ पे यूज किया था, ठीक है. फंक्शन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, ये कभी होगा, ये रिजल्ट आपको कब अप्लाई होगा, व्हेन अ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर. मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर विथ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस रिजल्ट, अदरवाइज दिस रिजल्ट विल नॉट वैलिड. ओके, इसके लिए हमारे पास जनरल मेथड है and we will explain this general method now. So we will have general method. Okay, so general method. General method means what? Suppose we have a matrix of order 3. Suppose in general or in particular, in particular, suppose we have a matrix of order 3. मतलब हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स का है. Then what? We assume that the required function phi can be written as, then we assume that the required function we assume that the required function phi of a can be written as like this. कैसा? phi of a equal to alpha 2 a to the power 2 means a square plus alpha 1 a and plus alpha naught identity matrix. Okay, where I is the identity matrix of the order 3. तो उसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, और आवर जॉब इज टू फाइंड आउट स्केलर और कांस्टेंट alpha 1, alpha 2 and alpha naught and resubstitute the values. Then we have to squaring the matrix A and putting A and I, then solve them. That will be your power of matrix A. Okay, this is for what? For 3x3 matrix where alpha naught, alpha 1 and alpha 2 are constant to be determined. Where यहाँ पे लिखो आप, where alpha naught, alpha 1 and alpha 2 are constant to be determined. Okay, so this is for 3x3 मैट्रिक्स. अगर सपोज मैट्रिक्स आपका 2x2 है तो कैसा इसको करेंगे? दिस इज फॉर 3x3 मैट्रिक्स. Now suppose
we have and 2 cross 2 matrix, 2 cross 2 matrix. Then we assume the required function. Then we assume the required function, required function like this: pi of a equal to how much? We write here alpha 1 a plus alpha naught I, where alpha naught and alpha 1 are constant, are constant to be determined, to be determined. ओके, सो इस तरह से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पावर को. नाउ लेट अस डू द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर. ओके, चलिए प्रॉब्लम लेते हैं. पहले 2 क्रॉस 2 कर लेंगे, फिर उसके बाद 3 क्रॉस 3 में जाएंगे. चलेगा ना? चलिए एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 3. If matrix A is given, matrix A is given to you 2 3 2 3 minus 3 minus 4 minus 3 minus 4, then find A to the power 100. A का power 100 निकालना है. What have to do this in this case? We first suppose solution for this. We first suppose let phi of A equal to what? A to the power 100. और phi of A को हम कैसे लिखते थे? अल्फा 1 A प्लस अल्फा नॉट I. गेटिंग? इस तरह से हम इसको लिखते थे. नेम दिस इक्वेशन नंबर 1. Name this equation number 1. Now the characteristic equation is given by the characteristic equation is given by a minus lambda I equal to 0. So we will have characteristic equation 2 minus lambda 3 minus 3, then minus 4 minus lambda, and this equal to 0. Now find out the eigenvalues of this matrix. So you will get multiply 2 minus lambda minus 4 minus lambda, then 3 3 is 9, minus minus goes plus, and this equal to 0. So just multiply this. So 4 2 is 8, this is minus 8, minus 2 lambda, then multiply karo, minus minus plus 4 lambda, minus minus plus 4 lambda, then minus minus plus lambda square and plus 9, this equal to 0. So you will get lambda square, okay, minus 2 and plus here plus 2 lambda, 9 minus 8 how much? Plus 1, and this equal to 0. So you will get 1 plus 1 का whole square, and this equal to 0. So यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 1 plus 1 एक ब्रैकेट, फिर 1 here lambda plus 1 bracket, and lambda plus 1 second bracket, and this equal to 0. So from this you will get minus 1 and minus 1. Okay, दो वैल्यू आपको मिल जाएगा आइगन वैल्यूज. Now what? Now go to the next page first. See here, lambda is eigenvalue of matrix A, then lambda must satisfy your equation. So therefore
equation 1 can be written as the equation 1 can be written as equation 1 can be written as phi of lambda equal to lambda raised to 100, and this equal to, here I am replacing a by lambda here in equation number 1 में. So you will get alpha naught lambda and plus, sorry, alpha 1, no? How much this? Alpha 1. So you will get alpha 1 lambda into alpha naught I. Okay. Now we differentiating this and name this equation number 2. Now differentiating this equation with respect to lambda. So differentiating this with respect to lambda. So differentiating this, so you will get 100 lambda raised to 99, and this equal to alpha naught and plus, sorry, alpha 1. This equal to alpha 1 lambda 1 की डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, and plus this is the constant, this will 0. Okay, so here you write 1 and plus constant 0. So you will get 100 lambda raised to 99 equal to alpha 1. Name this equation number 3. Now put lambda equal to 1 in both equation. Lambda 1 equal to how much we obtain lambda? बोलो. -1. हाँ. So lambda equal to -1 in equation number 2. पहले 2 में पुट करो. सर -1 है क्या +1 डालने है? -1 है ना? हाँ, -1 आया है. पुटिंग लैम्बडा इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2 में. तो यहाँ से पुट करो. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? इक्वेशन नंबर 2 1 रेस टू 100 इक्वल टू अल्फा 1 -1 एंड प्लस अल्फा नॉट. ये तो 1 ही हो जाएगा, इसका कुछ मतलब नहीं. ओके, नाउ सॉल्विंग दिस. सो दिस विल गिव 1 and this equal to minus alpha 1 plus alpha 2, sorry, alpha naught, alpha 1 plus alpha naught. Okay, name this equation number 4. Now put alpha lambda equal to -1 in equation number 3 में डालो. In equation number 3 we get 100 minus 1 raised to 99 equal to alpha 1. So here -1 raised to 99, this is the odd power, so this become -100, sorry, this become -100. यहाँ पे -1 होगा, so multiply, you will get -100. So alpha 1, so therefore alpha 1 equal to -100. You got alpha 1 is a -100. Now putting alpha 1 equal to -100 in equation number 4. Now putting alpha 1 equal to -100 in equation number किसमें? In equation number 4 में? In equation number 4. So this become 1 equal to, this become, we get 1 equal to minus alpha 1, minus plus हो जाएगा आपका. So -100 and plus alpha naught. So this become 1 equal to 100 plus alpha naught. So alpha naught equal to 1 minus 100.
So therefore alpha naught equal to minus 99. Is this correct? Is this correct? Yes, sir. Huh. Okay. Now putting value of alpha 1, putting values of alpha naught and alpha 1 in equation number, इसमें आपको पुट करना है in equation number 1 में, in equation number 1 we get phi of a equal to a to the power 100, and this equal to alpha 1. How much we obtain alpha 1? Minus 100 a, then alpha naught is minus 99i. Correct? ये मिला था आपको. alpha 1 is minus 100, then minus 99. चलिए, now our job is what? To find out this. So this equal to 100 a. Your matrix A is how much? Your matrix A is 2 3 minus 3 minus 4. 2 3 minus 3 minus 4, and minus 99 identity matrix 1 0 0 1. Just solve this. So you will get, multiply करो, minus 200 minus 300 minus minus plus 300 minus minus plus 400, and minus यहाँ प्लस लगा दो और माइनस को अंदर ले लो. minus 99 0 0 minus 99. Now solve this. So minus 200 minus 99, then minus 300 plus 0. Okay, then 300 plus 0, 400 minus 99. चलो सॉल्व करो इसको. हाउ मच गेट? इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करो. हाउ मच यू ऑब्टेन? बोलो. ये तो 8 हो जाएगा. minus 299 माइनस माइनस सेम है. ये तो 300, देन minus 300, देन यहाँ सेपरेट करो. हाउ मच यू ऑब्टेन? 301. कितना आएगा? 301. 301 आएगा. So this is your a to the power. Therefore a to the power how much? 100 equal to a वाला मैट्रिक्स minus 299 300, then minus 300, then 301. So which is required? a to the power 3, a to the power 100. Okay, so इस तरह से सॉल्व किया जाता है. Getting understood this? Yes, sir. स्टूडेंट, हाँ सिंपल है.